फाइनली वो दिन आ गया है जब तुम्हारी पहली डेट हो रही है लाइफ की एंड तुम डेट पे गए हुए हो वहां पे लड़की के साथ, एक दूसरे की आंखों में देख रहे हो, बातें हो रही हैं, there's a lot of fun happening, maybe drinks are flowing, माहौल बहुत सही है वहां पे and suddenly एक point पे ना your eyes lock in with each other. She looks at your lips ऐसे नीचे करके ऊपर and आसपास की हवा थोड़ी सी चेंज होती है and you think यार should I kiss her right now, या फिर ये बुरा तो नहीं मान जाएगी, या फिर मैं किस करूंगा इसने मना कर दिया तो, and then तुम उसी चीज में रह जाते हो, सोच में रह जाते हो और वो मोमेंट चला जाता है and now you missed the kiss. और अब पूरी डेट जो बाकी की बची है तुम सोचते हो यार क्या मुझे पहले किस कर देना चाहिए, अब कब किस करूं, नेक्स्ट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कब आने वाला है, कब वो टाइम आएगा when I'm gonna kiss the girl, बट वो टाइम कभी आता नहीं था and you go home dejected. अगर this is the situation with you, तुम डेट पे जाते हो but you don't know how to kiss the girl, और तुम्हें लगता है अगर तुम डेट पे चले भी गए तो तुम्हें करना क्या है और how are you gonna get your first kiss, और when are you supposed to kiss the girl, वो right moment क्या है, वो right time क्या है, और you don't know when to kiss a girl. So ये सारी चीजें, how to kiss a girl, when to go for the kiss without being rejected, how to find that perfect moment, वो सब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में. Let's go. Hey, what's up guys? Welcome back to another video. My name is Kshitij. You're watching Iron Man Lifestyle. Here हम तुम्हें सिखाते हैं कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है, डेटिंग स्किल्स कैसे बेटर करनी है, सोशल स्किल्स कैसे बेटर करनी है और लोगों से बात कैसे करनी है. All the while, how do you make yourself to be just a better, much more amazing, well-rounded individual? Alright, so इधर मैं तुम्हें 6 steps, 6 rules about going for the kiss, कुछ भी कह सकते हो तुम उन्हें, वो बताने वाला हूँ. When should you go for the kiss? What's the perfect time to go for the kiss? सबसे पहले हमें लगता है कि यार हम लड़की से बात कर रहे हैं और ऐसा होएगा कि हम बस बैठे हुए हैं आमने सामने और सडनली एक मोमेंट आएगा जब मैं उसको डायरेक्टली जाके किस कर दूंगा. कोई हैंड होल्डिंग नहीं, कोई टच नहीं, कोई फन ह्यूमर कुछ नहीं. या फिर हमें लगता है जब पूरे दिन वो डेट चली जाएगी, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होएगा, हम बस बात करेंगे, अच्छी खासी बात होगी और फिर मैं उसको घर तक ड्रॉप करूंगा. जब ड्रॉप कर रहा हूँ या तो गाड़ी में या यू नो हग करते हुए उसको बाय बोलते हुए तब जाके किस कर लूंगा. एंड एनी टाइम यू डू दैट, यू गो फॉर द किस व्हेन यू सेइंग बाय लाइक दैट विदाउट हैविंग एनी प्रायर फिजिकल टच, कुछ भी फिजिकल कनेक्शन पहले नहीं बिल्ट है, यू गो फॉर इट, नो किस, शी रिजेक्ट्स, शी इज लाइक नो प्लीज, आई एम सॉरी, नहीं, मे बी लेटर करके, और वो लेटर कभी आता नहीं है. दैट्स व्हाट हैपेंस विद यू. Now, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि your first kiss or when you're kissing a girl for the first time, it's not something जो out of the blue होने वाला है कि भाई तुम बस बातें कर रहे हो और suddenly किस का मोमेंट आता है और तुम किस करते हो. नहीं, it's not going to be an instant event, it's going to be gradual. So मेरी वीडियो What do women want, top 3 traits to get her attracted instantly, तो उसमें मैंने बताया है कि attraction for women is like a volume knob, कि धीरे 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 gradually build होता है. And for men it's like a light switch, on off on off. I like a girl, I don't like a girl, like we just need to look at a girl and be like I kind of like her. But लड़कियों के लिए वो धीरे धीरे build होता है. So when you're on a date, you need to build that attraction all the way up to the kiss. Now, you need to build things up. एक तो क्या attraction build हो रहा है. At the same time, touch needs to be built up. अगर तुम्हारा कोई physical connection नहीं है, कोई भी physical contact नहीं हुआ है, तुम hand holding वगैरह नहीं हुई है, then you will not be going up to the kiss. It needs to be a gradual progression. बात करते हुए तुम्हारा intent होना चाहिए वहाँ पे कि I like you, alright? It should be very clear. It should be a man to woman interaction, the way a man would talk to a woman, and there should be flirting going on, teasing going on. इन सब के साथ साथ you need to initiate touch as well. जैसे touch could be, you know, light high fives, handshakes. Thumb fight is something that I do most of the times to, like, you know, have fun, to make the interaction a bit more fun, the date more fun. A little, you know, pokes, ऐसे lightly poking, teasing, and then leading to hand holding, finger interlocking, arms around the waist, kissing on the cheek, then maybe the neck slightly, and then moving into the kiss. If you go directly for the kiss, it's not gonna work out. You need to go through these things धीरे करते to move into the kiss. Now, इसके लिए we just made a video a couple of weeks back, which is how to touch a girl. What are the top 5 rules on touching consensually, keeping consent in mind? Naturally, very touchy topics. So whether it's important for us to keep consent in mind as well. Alright, so watch that video. That will help you understand this process of, you know, touch and everything. How do you build it up to the kiss? So ये बात clear है कि भाई ये एकदम से नहीं होएगा, ये build करना पड़ेगा. Out of the blue कोई बात नहीं होने वाली है. पूरी vibe रहती है और वो vibe धीरे बढ़ती है. 0 से 100 नहीं जाना है, 0 से 1 2 3 4 करते करते धीरे 100 पहुंचेंगे. Point number 2, ये दिमाग में डालो कि it's always better, like if you're on a date and she likes you and you like her, it's always better for you to go for the kiss rather than not. Alright, ये risk लेना important है तुम्हारे लिए. Although like people ask, right, मैं वीडियो में भी बोल रहा हूँ मैं कि what's the perfect time for you to kiss the girl? The perfect time for you to kiss the girl is twofold. One, the best time for you to kiss the girl is when she wants to be kissed. The second thing इसमें is the perfect time to kiss a girl is that there is never going to be a perfect time. कोई moments आएंगे वो बिल्कुल
इन्वॉल्व, उनको हम कहते हैं विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। वो हमें आइडेंटिफाई करना है। इट्स दैट पॉइंट व्हेन वी गो इन फॉर द किस, द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। नाउ ये कब आएंगे, कैसे आएंगे? ऑटोमेटिकली नहीं आएंगे। यू नीड टू बिल्ड इट अप, कीनो करते हुए, टच करते हुए, मतलब फन में, ह्यूमर में, थोड़ा पास आके ये चीजें तब जाके बिल्ड होती हैं। एंड यू नीड टू टेक केयर अबाउट द कंटेंट आल्सो, कि तुम्हारी जो बात हो रही है किस बारे में हो रही है। तुम कोई इमोशनली इंटेंस टॉपिक्स के ऊपर नहीं हो, लड़ाइयों के ऊपर नहीं हो, वॉर्स, सोशल जस्टिस, फकिंग पॉलिटिक्स, ये सारी चीजों के ऊपर नहीं हो। इट नीड्स टू बी फन, लाइट हार्टेड, कैजुअल स्टफ, एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन टॉक अबाउट ईच अदर, यू कैन टॉक अबाउट ईच अदर्स लाइव्स, बट उसमें भी थोड़ा फन होना चाहिए और सेक्सुअल टेंशन मिसिंग नहीं होनी चाहिए कभी भी। सेक्सुअल टेंशन और फ्लर्टिंग आर गोइंग टू बी द मोस्ट की एस्पेक्ट्स आउट हियर। अगर तुम्हें सेक्सुअल टेंशन और फ्लर्टिंग नहीं पता और तुम डायरेक्टली यहाँ पे आए हो, बॉयज पहले वो देख लो प्लीज, वीडियोस हैं सेक्सुअल टेंशन और फ्लर्टिंग के ऊपर, वो मेंटेन करना, वो सारी चीजें करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हें बिफोर यू मूव ऑन टू द किस। इफ यू मेंटेन द सेक्सुअल टेंशन एंड फ्लर्टिंग एंड एवरीथिंग, ओनली देन विल द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कम। अब विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कैसी लगती है? विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ऐसी होती है कि लेट्स से यू टॉकिंग टू द गर्ल, ऑलराइट, तुम काफी पास में हो एंड तुम ऐसे कर रहे हो, लाइक यू नो यू लुकिंग एट हर, शी इज लुकिंग एट यू, एंड सडनली यू सेंस आसपास की ना वाइब चेंज होता है, आई कांटेक्ट डीप है, एंड हर आईज गो फ्रॉम योर आईज टू लिटिल बिट टू योर लिप्स एंड शी कम्स बैक अप, प्लस हर आईज हैव बिकम लिटिल बिट वाइडर एंड इट्स लाइक एनिमे आईज होती हैं जैसे, राइट? एनिमे में आंखें देखते हैं ना ऐसी बड़ी सी हो रखी हैं, या फिर डियर इन द हेडलाइट्स की, सडनली जैसे कोई गाड़ी में हेडलाइट्स होती है, कोई डियर हेडलाइट्स कैसे देखता है अगर गाड़ी आ रही होती है बहुत तेज रोड पर, तो ऐसे ऐसे करके देखता है, राइट? So when you talk to a girl, you're gonna notice her attention on you and her eyes are gonna light up, मतलब ऐसे थोड़ी बड़ी सी हो जाएंगी and she's gonna have this look sort of, I'm gonna try and mimic it, let's see कितना अच्छे से होता है। The look is like this kind of look, sort of, ठीक है? It looks weird थोड़ा सा। I haven't been too much of a girl in my life, guys, of course, तो मेरे को नहीं आता है। But anyway, so the flirty vibe जो हमारे end पे रहती है, वो कुछ अलग ही रहती है। The flirty vibe that I have on that end is like almost like, yeah, so you think so? Alright, cool, nice, okay, and we're like this close, alright, and I'm looking at her like this. And if I'm looking at her like this, she can feel butterflies in her stomach, alright? And I'm just talking random shit. Does not matter what I'm talking. In that moment, window of opportunity वाले में, जहाँ पे वो आ गया, I'm just like, let's say we're talking about something. Let's say she's telling me she likes to travel to Thailand. Alright, so you like going to Thailand? Alright, what else do you like? You like the guys there? No? What kind of guys do you like? You like Indian boys? You like the one you're looking at right now? Maybe. Yeah? You think so? And then I'm gonna go in for the kiss. Make out. Alright? So, that's generally how it goes. Alright, let's break it down थोड़ा और। अभी हम point number 2 पे थे कि it's always better to go in for it at the window of opportunity than not. तो window of opportunity ऐसे होएगा when she's looking at you like that, you're gonna sense the vibe shift. अब कभी भी दिमाग में तुम्हारे question आए, should I go for it or not? Maybe it's the perfect time, maybe it's not the perfect time, क्या time है क्या नहीं है? You should always fucking go for it. Why? Because अगर एक बार वो window of opportunity close हो जाता है ना, boys, almost impossible for it to open up again. अगर एक बारी में तुमने hesitate कर दिया ना, तो next time तो second date नहीं होने वाली। और एक मैं example देना चाहता हूँ अपनी एक story से। मैं college में था, there's this girl I really liked her, right? And she was great. I felt she was amazing. She had a great energy like me. And I was just like, yeah, this girl, I just want to spend time with her. It's amazing. And ये window of opportunity इतनी बार आया ना, but मैं escalate ही नहीं कर पा रहा था। वो मेरा time था, उस time पे where, you know, everything was great, मैं बात कर लेता था, but this escalation leading to the kiss, hand holding वगैरह भी चल रहा था यार, like properly with hug and everything, she'd sit on my lap, हम साथ में थे, all of that, kisses to the cheek भी चल रहे होते थे, I'd lift her up, but you know, that moment where you just gotta go for the kiss, वो मेरे से होता ही नहीं था। What ended up happening? She ended up meeting someone else, started dating him. Never did anything happen between us. कभी नहीं हुआ। एक बार और बाद में मिली थी 2 साल बाद। That time I was just being so fucking nice, and she wanted to kiss me, and again I didn't do anything. So now I just need to live with fucking regret all my entire fucking life with this same thing. तुम्हें वो regret नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। या तो तुम इस स्टोरी से सीख सकते हो कि भाई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी अगर मैं डेट पे हूँ। कंसेंट है यहाँ पे भाई, कोई रैंडम लड़की को पकड़ के मत बोलना अरे विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी किस करेंगे। अरे नहीं, डेट पे गए हुए हैं हम यहाँ पे यार। आई होप देयर इज नो वन लाइक टेकिंग थिंग्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो हम डेट पे गए हुए हैं, इट्स क्लियर कि भाई डेट है, तुम साथ में बैठे हुए, वहां पे वाइब आ गई, हैंड होल्डिंग वगैरह हो गई है। और ये भी होता है जस्ट शी वांट यू टू किस हर और नॉट। रैंडमली तुम जाके किस करोगे ना तो समझ नहीं आएगा, एंड दैट्स व्हेन पीपल गाइस गेट इनटू ट्रबल एंड गर्ल्स आर लाइक ओ जी तू कंसेंट ही नहीं ध्यान में रख रहे। यस, बिकॉज़ यू फकिंग डम फक्स भाई, तुम लड़के तुम बुद्धू हो। यू डोंट डायरेक्टली गो इन फॉर द किस, राइट? यू बिल्ड इट अप। सो उसमें हर एक पॉइंट पे यू आर सीइंग इफ देयर इज कंसेंट और नॉट। हैंड होल्डिंग हुआ है, गाल पे किस हुआ, हां ठीक है, इतने पास बैठे हुए, कमर में हाथ है, ऐसे फिंगर्स इंटरलॉक्ड है। नेक्स्ट स्टेप इज द किस। सो you go in for the kiss. Mostly, boys, 95% of the time you will get the kiss. Alright? If she doesn't want to kiss you, she's going to go back. But it's still better for you to go for the kiss. Why? Because अगर अभी तुम्हारा ये सब चल रहा था, whatever, man to woman हो रहा था, maybe बीच में तुम्हारा man to woman off हो गया, and she's thinking कि does he like me or does he not like me? Or maybe it's just a platonic interaction that's going on. But now that you've gone for the kiss, at least वो vibe set हो गई है कि you know you want to kiss her. Mostly, if you're building it up by going step by step, kino escalation, hand holding वगैरह से तुम धीरे धीरे ऊपर जा रहे हो, touch करते हुए to the first kiss, then it
it will not be a problem. Because if she does not even kiss you right now, the response that she's going to have is she's going to be like, no, not here. Or she's going to be like, not yet. Or she's going to be like, I don't kiss people on the first date. Or she's going to be like, let's wait for a bit. All of these things mean she wants to kiss you, just not right now. But हम लड़के क्या सोचते हैं, अगर लड़की ने बोला नहीं not here, हमें लगता है रिजेक्ट हो गया भाई, इसको मैं पसंद ही नहीं हूँ, घर चलते हैं, I'm so fucking embarrassed. नहीं, इसका मतलब ये है कि तुम बहुत पब्लिक में हो, उसको पब्लिक में किस नहीं करना है. Maybe she needs more comfort with you. बस पहली बारी वो मिली है तुमसे and she doesn't want to kiss someone on the first date. She's literally telling you that. She's saying it's too early. Maybe इसका मतलब है जब तुम next time मिलोगे तब you can go in for the kiss. Then I mean you can kiss and then she might be more comfortable. इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर let's say you're going in for the kiss and she's pulled back. इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हाथ पकड़ना भी बंद कर दो या फिर you put your arms around her waist और फिर तुम उसको एकदम छोड़ ही दो. नहीं, she's saying I'm comfortable doing all of the other things but I'm not comfortable with the kiss. So what you do, you back off, you smile, you're like all right whenever you're comfortable and then you move on joking, chilling. कोई फर्क नहीं पड़ा तुम्हें. Act like nothing happened. Act like nothing happened. अगर कुछ भी नहीं हुआ because exactly वही हुआ ना, कुछ भी तो नहीं हुआ वहाँ पे. So you went for the kiss, she's like अभी नहीं, बाद में कर दो. Like all right, cool, patience boys. So it's always better to go for the kiss than not, because अगर window of opportunity आया, if you don't go for the kiss, you're fucked. और अगर you go for the kiss and let's say she's like this is a bit too early, what's the best thing that would happen out here? You're gonna be actual, she's gonna actual and she's like yeah, this guy can take rejection, कोई दिक्कत नहीं है. And now she trusts you कि तुम ना जबरदस्ती उसको escalate नहीं करोगे जबरदस्ती किस करने के लिए. So she can meet you next time also. And now so when you can back off, girl feels much more comfortable. And now even if she's not thinking to kiss you, now because you've initiated the kiss, अब उसके दिमाग में आ गया कि हाँ यार ये मे भी किस करना चाहते हैं, मे भी मुझे किस करना चाहिए, तो वो वाइब शिफ्ट हो गई है. And this is the first thing and this is the same thing that happened with my first girlfriend. मैंने नया नया गेम सीखा था and I went in for the kiss. मेरे दोस्त ने बोला था कि भाई तुझे जाना ही है, मैं तू वापस आया मैं तेरे को मार दूंगा भाई, तू मर जाएगा if you don't go for the kiss. So I went for the kiss, like we were hand holding everything. I went for the kiss and she's like no actually Kshitij, I don't see you like that. All right. And I was like what? And I was like okay fine. And then I wasn't angry, I wasn't nothing, I was just like no it's okay. She's like I don't mean to break your heart. I was like nahi it's okay, completely fine yaar. फिर उसके बाद we were holding like my arms around her waist and we were walking, we were hand holding and घर जाके she texting me. I had fun, I texted her, we kept on talking. The next day we met again and then we met and then we became boyfriend and girlfriend. And I mean it just so happened. All right, so if you can just take that rejection and not be fucking crazy about it तो ठीक है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है. ठीक है. अगला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. आधे टाइम लोगों की डेट खराब इसलिए होती है, वो कभी किस के लिए जा नहीं पाते क्योंकि वो यू नीड टू नोटिस व्हेन यू फकिंग सिटिंग ऑन द फर्स्ट डेट. तुम टेबल के ऑपोजिट नहीं बैठ सकते. इतनी दूर कैसे किस करोगे? यूं चढ़ के जाओगे क्या भाई? ऐसे नहीं किस होने वाली ना. ऐसे यू नीड टू सिट ऑन द साइड. जैसे कभी पॉडकास्ट देखा है मेरा, अमीश आया था, साइड में बिठाया था ना मैंने. मेरे को मेकआउट करना हो तो उसको यूं पकड़ के कर लेता ना मैं. तुम साइड में बैठेंगे भाई, साइड में. अगर मैक्सिमम वर्स्ट केस सिनेरियो, लेट्स से तुम सिंगल टेबल पे बैठे हुए हो तो सामने सामने नहीं, तो ऐसे एडजेसेंट कॉर्नर साइड्स पे बैठ जाना. मतलब एक कॉर्नर के दो साइड्स पे बैठ जाना. जैसे ये वाला कॉर्नर है, यहाँ मैं हूँ, the girl sits there. It's super important where you sitting, because अगर तुम across हो, lot of hand holding, physical touch नहीं होएगा, physical connection नहीं होएगा, you will not escalate into the kiss. It's never gonna happen. You're gonna get stuck just fucking talking. बस बातें करते रहोगे. ठीक है, जलील करके आओगे, मेरे को बेइज्जत करके आओगे डेट पे जाके अपनी. मत बोलना भाई, अगर तुम ऐसे ऑपोजिट बैठ लड़की को मत बोलना मैं क्षितिज के चैनल से सीख के आया हूँ. बेइज्जत नहीं करेगा कोई भी लड़का मेरे को. अगर तुम डेट पे जा रहे हो एंड द गर्ल वांट्स टू किस यू और तुमने किस नहीं करा, भाई तुम क्या, एक तो तुम बहुत जलील इंसान हो. ठीक है, who breaks a girl's heart like that? If there's a window of opportunity, right? लड़की को लग रहा है कि उसको like she wants to kiss you और तुमने किस नहीं करा, भाई ये बहुत जलील हरकतें हैं, मत करो. Don't break a girl's heart like that. तुम अपना ही सोच रहे हो कि भाई मेरी फट रही है. Think about the girl also ना, उसको कितना बुरा लगेगा she wants to kiss you and you didn't kiss her. ठीक है, इंसान डेट पे धीरे धीरे करके वो करो and then go for it. थोड़ी सी फटती है but it's just reference experience. Once you go for it, थोड़ा calm down होने लग जाओगे. जैसे अप्रोच एंग्जाइटी के टाइम पे होता है ना, अप्रोच करते हुए फटती है, फिर उसके बाद चिल हो जाता है. This is the same. This is sexual rejection. उस टाइम सोशल रिजेक्शन होता है, ये सेक्सुअल रिजेक्शन होता है. यहाँ पे तुम किसके लिए जा रहे हो, अगर मना कर दिया तो ज्यादा पेन होता है, लगता है हमें होने वाला है बट कुछ नहीं होने वाला है. इट्स गोना वर्क आउट फॉर द बेटर. वंस यू सॉर्ट दिस आउट विल बी हैप्पी. पॉइंट नंबर 4, अब तुम साथ में बैठे हुए हो. नाउ व्हेन यू आर किसिंग द गर्ल, योर सब कम्युनिकेशंस विल चेंज. सब कम्युनिकेशंस मतलब तुम किस तरीके से बात कर रहे हो, योर आई कांटेक्ट, योर वोकल टोनैलिटी विल चेंज, योर बॉडी लैंग्वेज विल चेंज एंड प्रॉक्सिमिटी होगी वहां पे बहुत. मतलब तुम बहुत पास में होगे. सो जैसे मैं अभी एक एग्जांपल दिया था तुम्हें, हाय या सो Achha, so you're in Thailand. Oh, do you like the guys there? You see how my tone has changed? One thing out here is happening is there's a flirty vibe going on. मैं flirt कर रहा हूँ, but my eye contact is very solid like this. There's a slight smile. ऐसे थोड़ा सा smile है यार. Okay, you like that? थोड़ा misinterpret करके थोड़ी double meaning सी vibe दे रखी है मैंने यहाँ पे. Plus, I'm smiling. एक slicey smile है मेरी. आई कॉन्टैक्ट है. वोकल टोनैलिटी कितनी चेंज हो गई है. ठीक है, द टोन इज लाइक हे हाय यू नो व्हाट्स हैपनिंग. वो चेंज हो गई है एकदम थोड़ी बहुत. इट्स लो, pauses हैं वहाँ पे, धीरे धीरे है, because we're going in for the kiss. The goal is to make it sensual, not high energy. This is not high energy. This is chill,
and sensual and get the flirts going on inside you. All right. By this time, you should be very attracted to the girl, and she should be very attracted. She will be very attracted to you if she's holding eye contact the way I'm talking to you right now. If she's just holding eye contact, sitting next to me, or holding hands, I know she wants to kiss me, and I'm gonna look at her in the eyes. Once you've had like your first couple of kisses and it's not like a new thing for you, तो तुम ना ये नोटिस करने लगोगे कि वो जो मोमेंट होता है ना विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी वाला, की वो जो लुक होती है फेस पे व्हेन अ गर्ल वांट्स यू टू किस हर, वो बहुत एविडेंट हो जाएगा तुम्हारे लिए, और ये एविडेंस बस रेफरेंस के साथ आने वाला है तुम्हारे लिए. सो जस्ट गो आउट देयर. Go for it, boy. Next, point number 5. बातें क्या करनी है इस पॉइंट पे? You need to talk about ये फ्लर्ट तो हम कर ही रहे हैं, बट इसके पहले on the date your conversation should be connection building stuff के ऊपर. शुरू में of course there'll be fun and everything, like when you go for the date you hug her, you like hey hi what's up, and then तुम jokes crack कर रहे हो, but थोड़ा बहुत connection building भी यहाँ पे होना चाहिए, which is commonalities, vulnerabilities, अपनी share करना, बातें करना अपने बारे में, अपने past के बारे में थोड़ा बताना, asking her what she does and why she's doing all that, and थोड़ा सा fun. So I've made a video on storytelling, और एक video है how to make a fall in love, that is on connection building. So watch those 2 videos. This will really help you in this phase. One thing I love during this time, like when I'm on a date, is I love showing photos on my phone. So if someone's sitting next to me, कोई लड़की मेरे साइड में बैठी हुई है, I'm going to take out my phone and I'm going to ask her to scoot over. I'm like, look, like ये देखो मेरे कॉलेज में कितने बड़े बाल थे. So anything I can show. I'm like, यार ये देखो थाईलैंड में क्या कर रहा था मैं, ये देखो मैं इधर गया था, ये देखो वो गया था. Like, and I'm like, come here, let me show you my photos. Alright, कि ये देखो how crazy was it. And she comes over, my hands around her waist and everything, और ऐसे करके we're so fucking close. And I'm talking to her in her ear. I'm like, yeah, you see this? हाँ, okay, you see that? बहुत ही sensual सी vibe create हो जाती है, and that sets the vibe and the rhythm like crazy. So I like doing that. I like going for a thumb fight. I like getting 2 fingers interlocked. ऐसे if I can get these fingers interlocked, going for the kiss becomes fairly easy because this is such an ultimate form of physical connection going on, right? Just as fingers interlocked, that's just like so clear intent कि यार हम एक दूसरे को पसंद करते हैं. ये पॉइंट आना बड़ा क्रूशियल होता है. And then finally point number 6, जब when you go for the kiss, जब kiss होती है ना, don't be fucking desperate. So be the first one to pull back. How do you pull back is when you're going in for the kiss, you go in just 2 pecks and then pull back. All right, मतलब ऐसे है, you go in and then pull back. You wanna leave her sort of hanging. She like ऐसे करके थोड़ा सा, and you wanna go like and then pull back. This will show 2-3 things. Either when you're pulling back, you can be like, we'll have time for that, relax. If you say this, she's gonna chase you even more. She's gonna be like, oh my god, I want this guy doesn't even want it. Secondly, it shows that तुम desperate नहीं हो, which makes you even more attractive to her. And because you've left her wanting for more, she does want more. So जब भी तुम किस के लिए जा रहे, don't be desperate and be like, and the girl थोड़ी देर वो क्या करेगी, okay please stop enough. And now उसका experience is like she's had to push you back and you're very desperate about it. Versus तुम pull back करते बोलते हो relax, you know, there'll be more time for that. Alright, let's take it slow and steady. Let's not go hot and heavy out here. So इनमें से तुम कुछ भी कह सकते हो कि यार let's take it slow. This is not the right place to do it. There's gonna be enough time for this. Or even crazier, you can be like relax यार. I mean, I know you like me, but easy. There'll be time for that. ऐसे कॉकी से वैसे तुम कह सकते हो, and that will make her even more turned on towards you. बहुत ही ज़्यादा epic चीज़ होने वाली है, and that will make her want to meet you again as well. So this was exactly how you go for your first kiss and when you should go for it, और कैसे तुम्हें first kiss के लिए जाना है. अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है boys, तो नीचे सब्सक्राइब बटन पड़ा हुआ है, उसको दबा दो, spank it, smash it, demolish it. This is Kshitij signing off. अगली वीडियो में तुमसे मिलते हैं, ऐसी ही धमाकेदार चीजें लेके आएंगे. Peace.